ठीक है। Yes, sir. ओके, तो मैंने ये ले लिया, यहाँ पर मैं एक्सेल पे किया, सिंपली प्लॉटेड फॉर माय रेफरेंस आई से बॉडी एक्स एंड वाई, ठीक है। सो ये आ गया, सो आई विल सिंपली टेक इट फॉर 5 बॉडी पार्ट्स, वेस्ट, वेस्ट, फिंगर, सॉरी, आई विल टेक इट फॉर फुट एंड शोल्डर, ठीक है। ये लेंगे, अभी मैं यही लूंगा, ठीक है। वी कैन डू दिस फॉर रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स एज वेल। अब मैं अगेन वी गो टू टैबलू, नाउ आई नीड टू फाइंड इट फॉर रिस्ट। तो आप इसको ऑब्वियसली यू कैन गो टू रिस्ट एंड देन यू कैन से वही राइट क्लिक करके एनोटेट, और वंस यू हैव दिस एनोटेशन इनेबल्ड एंड एक्टिव नाउ, सिंपली ड्रैग इट, ड्रैग दिस पॉइंट। ऑब्वियसली मैंने इसको यहाँ से, यू कैन ड्रैग इट, so let's say this is my rest, it says 59.8, so 60 and y is 337, so ये क्यों कम हो गया, because obviously अगर आप देखो width कम होगी, so 60 and 338, so again I will go here to my excel file, I will say 60 and 338, ठीक है। then is my for finger, simply extend this one, ठीक है, 33 and 283, so I will say 33 283, now we need it for foot, तो मैं इसको अब यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ फुट पे, so it says 137 and 17, ठीक है, so 137 17 shoulder, so shoulder is 255 and 503, 255 and 503, ठीक है। So this is how we have to take out, मतलब you have to find out the x and y coordinates of each of the body parts. I hope this is clear. Quick question. So ये मैनुअली करना पड़ेगा फिर, मतलब जब भी हमें करना है। Correct. Yes, this is the step which you have to do manually. और Tableau में तो you will be able to find this by using annotation. In other tools it's very complex process. ठीक है, तभी मैंने बोला. But then obviously if client asks for it, this is how we have to do it. Okay. Okay, sir. ठीक है. Now क्या बता रहा था, sorry. ठीक है, so now anyone if you can take a quick picture of this one, मोबाइल से पिक्चर ले लो, because again I will have to बार बार इधर उधर करना पड़ेगा. ले लिया पिक्चर? डन? हाँ ले लिया सर. ठीक है, cool. So okay, now our job is done, we go to tab, ठीक है। So अभी तो हमने, अब हमारा क्या हुआ, so we now know the body part, कितने body parts कितने बार affect हुए हैं, that obviously we can have by grouping it. Now we have the x and y coordinates, primarily we now have everything, ठीक। अब हमने बस ये टास्क किया था to know the x and y coordinates. अब we'll simply add that data, जिस डेटा को हमें यूज करना है to plot, so we have that level of information available in that lab test वाला data, right, और हमें उसको plot करना है. So I will simply select that data, lab test, open, ठीक है, और okay, so that is added here, data name, body, ठीक है। अब again you will have to do the same task, ठीक है, you will have to have that body part added here. So what you will have to do, okay, so before that, just a minute, अभी क्या है, if we see this data, so we have the body part, we have the injury, we have the number of records, but still we do not have the x and y coordinates of the different body parts in this particular field, ठीक है। अभी तो हमने इस फाइल को ऐड कर लिया, वो इंफॉर्मेशन हमारी दूसरी फाइल में, ठीक है। सो द मैंडेट इज, हमें वो इंफॉर्मेशन इस फाइल में लानी होगी ना, तभी तो हम इसको फिर यूज कर पाएंगे। वी विल लेट टैबलू नो कि हाँ ये एक्स के लिए इस फील्ड को कंसीडर करो, वाई के लिए उस फील्ड को कंसीडर करो. तो सो प्राइमरली व्हाट यू विल हैव टू डू, वी विल हैव टू क्रिएट टू कैलकुलेटेड फील्ड्स हियर. ठीक है, सो एज टू हैव दैट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हियर. सो आई विल से लेट्स से एक्स कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, अब अब हम ये क्या कर रहे हैं, आई गॉट इट राइट. अभी ठीक है, लैब टेस्ट वी हैव टू प्लॉट यूजिंग दिस डेटा, वी हैव टू प्लॉट, बट देन दिस डेटा स्टिल डज नॉट हैव द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स. जब तक एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं होगा वी वोंट बी एबल टू प्लॉट इट, राइट. इसलिए हम पहले अब यहाँ पर one by one we will define the x coordinates. We will create two fields here, one with respect to defining the x coordinates, one with respect to defining the y coordinates. The function which is obviously used here is a case. You have a case function. ठीक है, so you will simply say, यहाँ पे जो logic बनेगा, so you will get to know how does the case function also work. So case body parts affected, so case then the name of the variable. ठीक है, so that is body part affected. So we will say when,
ठीक है, तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इट। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो केस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज ऑब्वियसली योर बॉडी पार्ट ग्रेटर, कुछ भी हो सकता है, राइट? एंड देन व्हेन, सो आई विल सिंपली से व्हेन इट्स आई, ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू, क्या था वैल्यू फॉर आई? इज इट 530? क्या था? किसी ने फोटो इमेज लिया था ना? ओह सॉरी, मैं म्यूट पे बोल रही थी सर। 188 एंड 593। नहीं नहीं, x क्या था? x was 188, right? We are defining the x. 188। ठीक है, Okay. so now since we have to define the primarily the x for all the different body parts, तो मैं इसको instead of बार बार लिखने का ना, simply copy paste it, because we know I have to pass the same line for 4 different body parts. So first is I, we can take any other, so let's say this is my wrist, then comes my finger, ठीक है, then comes your foot, then comes your shoulder, ठीक है। So now we will simply change the value. What was wrist? Wrist के लिए क्या था? 60, 60. For finger? 33, For foot? 137, And for shoulder? 255। ठीक है, and then it needs to be end by and, we simply say and, ठीक है। So यहाँ पर calculation is valid and we have defined the x coordinates. So primarily field add किया है, जो कि हम बता रहे कि अगर I हो तो this is the x value, this is for wrist, this is and so on for other parts. I will simply copy this because हमें ये same चीज करना है for y, and it's just that the values will change, ठीक है ना? So I will simply copy this, apply and okay. So as we know, कोई भी calculated field हम create करेंगे, so it will get created with an equals to sign. Again I will go create one more calculated field. I will say it y coordinates, ठीक है। Simply copy किया था, paste कर दिया. What we need to is just change the values. क्या था? For I it was 593. 593, Wrist 338, 283, 17 and 503। 503, ठीक है, हमारे पास y coordinates भी आ गया, job is done, ठीक। So now obviously in this file we have the all the informations available, ठीक है। ये information के लिए पहले वाला task हमें करना पड़ा था using the annotation. So now you simply go to map, now we will say background images, this needs to be linked with lab test वाला data, ठीक है। So I selected this lab test, add image पे जाएंगे, same task, we will locate that particular image, ठीक है ना, can be any of the image. Now you will say x field will be determined by your x coordinates वाला field, y field will be determined by your y coordinates वाला field. The value remains the same, it is 0 to 360 and this is 0 to 649, ठीक है। Apply and then okay, ठीक है, and then again we say okay, cool. अब हम क्या करेंगे? So we need to simply have that image here. तो simple है, simply take the, जो हमने पहले भी किया, x coordinates को यहाँ ऐड किया, y coordinates को यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ guys कि obviously if you see, you know the default nature of Tableau कि क्या करता है, जब भी हम कोई measure लेंगे it will always aggregate it, right? So it does the summation. तो अभी ये क्या कर रहा है? It is doing the summation, that is why you are able to see जो भी हमने values पास किया ना, as per the level of information we have in our data, it's doing the summation and giving us the value. X coordinates का ये value, y coordinates का ये value है, और छोटा सा image यहाँ पर हमें कहीं दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। इसको overcome करने के लिए as I told you कि primarily हमें इसको disaggregate करना होगा, because we want each of the data points to be treated individually. So you simply go to analysis, ठीक है, and then you simply click on this aggregate measures. Once you click on it, you are able to now see that body part and the different obviously the views as well, ठीक है। This is how it got showcased here. Now to make it more interactive, body part affected को let's add it into the color. So obviously each of the body parts is now having different color as well, and we can add number of records onto size as well, ठीक है। तो जिसका जितना बड़ा साइज है या छोटा साइज है, primarily describing कि कौन सा body part ज़्यादा या कम it got affected across different presets. Clear? Does it make sense? This is a use case. This I explained to you because this is one of the important use case which you will find during interview or during projects as well. Okay, this is obviously the steps which we have to follow, and for sure client will not give you the x and y coordinates because वो होता ही नहीं है. So very simple, using annotation, find out the x and y coordinates, use that file, create a calculated field and plot it. Then obviously things remain the same, color, size and all that.
ठीक है, Yes, sir. चलो कूल है, you guys practice on these, ठीक है. Now obviously in the next session